Now, coming to practical applications and understanding our own journey, how can we use this knowledge of past lives in our current life? Okay, fine. Now you want the practical application. Okay, see, the belief in reincarnation, that is past life ho ya karma ho, it is not a philosophical concept. Okay, it offers several practical application and for understanding and navigating one's life. We can navigate our own life by our own understanding. That is the meaning. Okay. Okay. So अभी तक तो तुमने इतना जान चुकी हो, understand कर चुकी हो. So now I am giving you a trial for you how you can make your life better by using these tips. So by viewing life as a continuous journey of the soul, this framework can provide profound insights and a sense of purpose. So here are some of the key practical applications I'll be giving you. See, instead of simply managing symptoms with medication or behavioral therapy, the reincarnation model suggests you finding the root cause. पहले root cause को पकड़ो. Then heal it properly. By understanding that a fear of height, for instance, it might stem from a fatal fall in the past life. So at that time, a person can process and release that old trauma, and this can lead to a more complete and lasting healing. So there are kinds of healings where we give them. Okay. So by that, they can come out of that. Oh. Okay. And see another one, it is making sense of relationship dynamic. कभी कभी relation में बहुत सारे लोगों को problem हो जाता है, या husband and wife में, या father and child में, या grandfather, या boss and clients, offices में, बहुत सारे things हमें देखना पड़ता है. So यहाँ पे the concept of karmic connection, it provides a powerful lens for understanding. Basically, the level of understanding should be at most in each level and in every level. Okay. And we are drawn to certain people, and some relationship are so challenging. कभी अच्छा होता है, कभी अच्छा नहीं होता है. So that is एक बार instant connection हो जाता है. That is an immediate intense attraction to a new friend or a partner. It can be understood as a soul connection from a previous life. And sometimes it is a difficult connection. That is a persistent difficult relationship with a family members हो, या partners हो, या होने वाला husband हो. Okay. So that is concerned with the typical term called as karmic depth or an unresolved lessons. So अगर हम अच्छी तरह से ये सब्जेक्ट को जान लिए ना, instead of viewing the person as a tormentor, ये tormentor है, ये अच्छा नहीं है, अगर हम लेंस अपने आप में डालें ना, तो हमें पता चलता है कि हम क्या है, है ना. So वो अगर ऐसा है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी वही कर रही हूँ वो जो कर रहा है, मुझे वैसे ही करना है नहीं ना. अगर मेरे में अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे चेंज होना है, उसको उसके हाल पे छोड़ देना है, मगर मुझे थोड़े अच्छी तरह से रहना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को मैं जानती हूँ, मुझे ये पता है अगर मैं भी उसी की तरह करूंगी तो उसमें और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा, है ना. सो दैट सब्जेक्ट, दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट हैज टू बी देयर इन यू. ओके. सो दैट ऑल इवन हैपेंस विद द संस्कार. व्हाट आप जान चुके हो, अपने बच्चों को पढ़ाइए इसके बारे में, अच्छे संस्कार दीजिए, सो दैट वो भी अच्छे पाथ पे चलना शुरू करें, सो दैट एक साथ एक फैमिली इवॉल्व हो जाता है. हमारा इंटेंशन यही है कि सबको अच्छा करे, देन वो आगे बढ़े, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शक्ति उनमें आ जाए. हम डिटेल्स में बता सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से क्या प्रॉब्लम है और कैसा जानना है, मगर उनको रेमेडीज तो करना है. Of course. So they can come out of these things. Yeah. So this is all these tips I'm giving so that they can evolve by themselves by little kind of understandings. Yeah. So that is the way. What I want to say is identify your soul's purpose. आपका soul का purpose क्या है वो आप पहले identify करो. Then the talent will come in you. जब तक आप अपने आप को identify नहीं करते हो तो वो आएगा कैसा, है ना. इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटसाइड, ट्राई टू लुक इनवर्ड. आप अपने टैलेंट को पहचानो, क्या है क्या नहीं है, बिकॉज यू नो बेटर देन एनीवन एल्स, है ना. सो दैट आइडेंटिफिकेशन, दैट सोल पर्पस, यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. एंड समटाइम्स इवन कल्टिवेटिंग कंपैशन एंड नॉन जजमेंट. हियर दैट बिलीव दैट एवरीवन इज अ सोल. हम सभी यहाँ पे जो कोई भी है सोल ही है. हम भी सोल है, एनिमल्स भी सोल है ना. हमारे पास अगर एक पेट है, एक डॉग है, कैट है, कोई भी है, वो ऐसा नहीं कि वो एनिमल है, दैट आल्सो कम्स फ्रॉम वन फैमिली, यू नो, है ना. सो वो कनेक्शन वहाँ पे बिल्डअप हो जाता है. ओके. तो वो एनिमल भी एक सोल एक लेवल पे कंफर्ट फील करता है, चाहे हम वो हमारा
सम और द अदर वे रिलेटेड है लास्ट लाइफ में, जो उनका भी है, जो आए हुआ है हमारे साथ, है ना? तो आजकल यू कैन सी डॉगीज, दे आर आल्सो हैविंग वेरी लैविश लाइफस्टाइल, मस्त, ओके, सो देयर इज अ कनेक्शन. ऐसा नहीं कि वो हमें अलग तरीके से देखना है. दैट एनिमल आल्सो इज अ काइंड ऑफ अ सोल व्हिच इज ट्राइंग टू कन्वे सम मैसेज टू अस, and we have to understand that message. So there we have to cultivate compassion and non-judgment, है ना? So चाहे वो animal हो, चाहे वो person हो, चाहे वो कोई भी हो, that level of compassionate you should be, and non-judgmental you should be. That is understanding others' journey. When someone behaves in a way you find challenging, you can consider that their action might be a result of their own karmic lesson. ये उनका lesson है, okay? एंड उनका पास्ट लाइफ ट्रॉमास है. दिस कैन रिप्लेस जजमेंट विथ एम्पैथी. तो उनको दोष देने से पहले समझो उनको पहले, है ना? यू आर राइट. हाँ, उनको जब हम वो ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ तो कारण रहेगा ना, तो उनको पहले अच्छी तरह से समझ के ले लो वो क्या बोलना चाहता है, क्यों ऐसा कर रहा है, और मैं क्यों ऐसा उनको रिप्लाई दे रही हूँ. सो वंस व्हेन यू सी दैट, then life goes better. So basically when you understand the, let's say, psychology behind why someone is acting the way they are, things actually get better, because you will think from a perspective of that person, and you won't make rational decisions while doing something to them, या फिर like quick reactions नहीं आती है. Like once you understand कि सामने वाला person क्या कहना चाह रहा है, or why a person is reacting a certain way, it does become easy. So what I want to give you the message is seeing the divine in all. सब में भगवान है, सब सोल में, बिकॉज सभी सोल एक ही से ओरिजिनेट हुए हैं, और बाद में भी जाने के लिए एक ही के पास जाएगा. Soul has come from Atma, has come from Paramatma, and again the Atma is going to merge in Paramatma. है ना? The origin is the same. सभी में प्लस माइनस रहता ही है. But when we understand ये प्लस क्यों है, ये माइनस क्यों है, then we resonate with that person. Okay? So if every person is a soul progressing through the cosmic school, अभी कॉस्मिक स्कूल के बारे में हमने एक एग्जांपल लेके डिस्कशन कर चुके हैं, दैट एवरी पर्सन इज वर्थ ऑफ रेस्पेक्ट एंड काइंडनेस. व्हेन दिस सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस जहाँ पे हो जाता है ना, वहाँ पे एक डीप कमिटमेंट और ट्रीटिंग अदर्स विद कंपैशन वहाँ पे अपने आप शुरू हो जाता है. देन वहाँ पे प्यार बढ़ता है, अनकंडीशनल लव इट फॉर्म्स, एंड व्हेन अनकंडीशनल लव ग्रोस एवरीवेयर दैट वाइब्रेशन goes. So then you will become a magnet for love. And compassion. So you attract that. In summary, the practical application of reincarnation, it is not about dwelling on the past, but about using its insight to live a more conscious, purposeful, and compassionate life in the present. So Roopashri, can you give me your final thoughts? Okay. So in summary, I can say that the practical application of reincarnation, it is not just about dwelling on the past, but you should have to use its insight to live a more conscious and purposeful and compassionate life in the present. This is what I want to give you, and it offers a framework for self-understanding, providing a narrative for our unique, challenging relationship, talent, empowering us to take charge of our own soul's ongoing evolution. So guys, whoever is listening to this podcast, try to evolve by yourself. What I can say as a final thought. That's really beautifully said. But guys, I personally think that people don't always realize the purpose of their life, because honestly, not everyone is, doing the inner work that is needed to realize the purpose of their life. And Roopashri, that's where I think astrology is doing wonders. Yes, even you are. So yes guys, if you have any questions, do connect with Roopashri, because I'm saying this because I have never seen anyone doing so much research and scientifically and spiritually. I've seen your work, Roopashri, also just to give their best to people. So guys, I would personally say she is the best and she knows what she is doing. So if you are someone who is ready to explore their soul and spiritual journey, join us on our exclusive channel, Divine Grace.
Also, guys, like, share, and subscribe for more spiritual and astrological insights, and comment down your favorite topics so we can bring you better information and knowledge on them. Thank you so much. Thank you so much, Roopashri. It was so great having you, and see you for more. Sure, anytime. Thank you so much from my side too.